रथयात्रा क्राइसिस मैनेजमेंट सपोज रथयात्रा 3 जन लोकंकर डेथ हे गला किंबा हमरो ई क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यू टू एफएम रो केस जो थ्रू आउट ओडिसा रे गोटे हेवी प्रोटेस्ट करा गला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमर भुवनेश्वर रे देखिया को मिलला जे लोकसभा सॉरी लोकसभा सदन को घेराव बेले हमर जो वाटर कैनन यूज करा गला टीयर गैस हो कि रबर बुलेट हो एगुडा को यूज करा जायतिला तो क्राइसिस मैनेजमेंट जेहेतु सपोज यू आर जो माने एसडीआई पीआरओ रो इंटरव्यू काली दउ छंती तो तांको पचरा जीवो जे तमे गवर्नमेंट रो पीआरओ हिसाब रे केमिति सिचुएशन टा को हैंडल करबन हाउ यू विल एड्रेस द मीडिया किंबा तमे जदी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अछो किंबा एडीएम अछो तो केमिति से सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करिवो किंबा तमर जदी आमे कहले रथ यात्रा केस रे तमे देखि जे पुरी रो कलेक्टर को इमीडिएटली ट्रांसफर करा गला ओके तो जते बेले कोनोसी क्राइसिस सिचुएशन आसुची तो क्राइसिस मैनेजमेंट तमे केमिति करिवो ओके से आउ गोटे कथा हो जे करप्शन को लेके सपोज तमर ऊपर ऑफिसर कहउछंती ऑलरेडी सम करप्शन हेजी एंड तम पाखे एविडेंस अच्छी केमिति से सिचुएशन को तमे हैंडल करिवो ओके किंबा एबे रिसेंटली जंती पेपर लीक हेची काली हमरो परीक्षा थिला एंड पेपर देखला बेलको ऑनलाइन ने पूरा पेपर बुलुची तो से सिचुएशन को केमिति तमे सपोज चीफ एग्जामिनर अच्छा पूरा टोटल एग्जामिनर रेस्पोंसिबिलिटीज तमे नेइछो एंड तमे कोन करियो दरकार एभला सिचुएशन जदी पडिला किंबा फेक न्यूज जो जोडा के हमरो फेक न्यूज जोगु सपोज हमरो रॉयट हे जाउची किंबा कम्युनल टेंशन होची तो से भला सिचुएशन को केमिति हमें हैंडल करिबा दीज आर सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जोडा कि निहाती ए क्वेश्चन गुडा का हमें डेली लाइफ रे देखुचे तो सही सिचुएशन को केमिति हैंडल करिबा तो ता ऊपर हमरो क्वेश्चन पचरा देछि आगरु आ पचरा भी जीवो ओके जो गुडा का हमरो रिसेंटली बहुत माने हमें कहबा जे न्यूज रे अछि ता ऊपर डेफिनेटली पचरा जीवो ओके सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन आ गोटे क्वेश्चन होछि जे बहुत सपोज ईयर गैप अछि सपोज तमरो हमें कहबा जे तमे ग्रेजुएशन पास कलो 2020 रे एंड नाउ 2025 तुमको पचरा जीवो जे लास्ट 4-5 इयर्स कोन करू व्हाई देयर इज ए गैप तो जदि हमें खाली प्रिपरेशन पे अछि तो केमती गोटे कंस्ट्रक्टिव वे रे आंसर ता हमें कहिबा और पॉजिटिव वे रे आंसर ता कहिबा ता पे हमें ता पे भी हमें डिस्कशन करिबा ओके सो मो क्वेश्चन को लास्ट को आसीबी जो ईयर गैप ओके सो लेट्स डिस्कस एटा हमर जो क्वेश्चन हमर होची एबे रिसेंटली द हॉट टॉपिक जोटा हमर चली छन ता पर भी हमर पिपिली एरिया रे पुरी रे भी हमर जने झियन को ऊपर को हमर जो पेट्रोल फोपड़ा जाइतिला तो ता ऊपर भी हमर न्यूज रे अछि तो सपोज ए भले गोटे क्वेश्चन पचरा गला कि ए फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम एफएम कॉलेज अटेम्प्ट्स सेल्फ इमुलेशन एट द कॉलेज गेट एंड माने allegation anuthile harassment by a faculty member and inaction by the college administration and the issue it is goes viral and protests throughout the state amar protest hela as a sub collector or district magistrate how will you handle this crisis ethically and effectively kemiti tame a crisis ko handle karibo okay and this question is likely to be asked jo bhi amara माने अपकमिंग एग्जाम आसुची इंटरव्यू रो एग्जाम में भी हमरो एसडीआई पीआरओ किंबा हमरो किंबा ओएफएस रे भी हमरो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी यदि पचरा जाए तो केमिति हमरो हम सिचुएशन टा को हैंडल करे और एज ए पीआरओ सपोज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो माने एसडीआई पीआरओ काली जाउ छंती एग्जाम दबा पई सपोज यू आर द पीआरओ फॉर एफएम कॉलेज तो हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन सो को कार कोन आईडिया केमती सिचुएशन टा हैंडल करियो जो माने एसडीआई पीआरओ परीक्षा देबो खाली एनी आईडिया इस केमती तमे सपोज पीआरओ फॉर एफएम कॉलेज और गवर्नमेंट पई तो हाउ विल यू एड्रेस द मीडिया
तापर हमें देखिबा आज कलेक्टर हिसाब रे कोन करबा आगो पीआरओ हिसाब रे तमे कोन करबा वो कोन करबो एनीवन अंशुमान को सर अलिवा को अलिवा को so as a PRO how will you handle the situation Good evening, sir. As a PRO, I'd like to analyze the situation first. Then I would take a back step and be really empathetic towards the situation and offer my condolences to the family first. Then I would let the public know about the processes that are being conducted to give the girl proper justice. So that's how I will move forward. okay so as a district collector हिसाब रे anyone कोन तमे एक्शन नबो suppose you are the DM for बालेश्वर वॉल्यूम बहुत कम आछि साउंड मोर वॉइस क्लियर नहीं ठीक है ठीक আছে স্যার okay suppose you are the DM बालेश्वर so what action you will take तो जदि बालेश्वर कलेक्टर एंड डेफिनेटली सिचुएशन टा गोटे प्रैक्टिकल हे छी ओके आकाश को हेलो हां को आकाश हाँ सर आपण मते सुनि परछन्ती हां सुनि परछि को हाँ थैंक यू सर नमस्कार सर एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर माय फर्स्ट स्टेप मो प्रथम स्टेप सर एया रहइबो जो माने कल्प्रिट बोले हम सो जहा को भाबुचे सेमानकु से जगह रु दूरेई दबा बा मिनी सेमानकु आईनगत प्रोसेस रे हैंडओवर करिबा कारण जते पर्यंत सेमाने से जगह रे रहिबे प्रोसेस चांसेस ए आछि जे वायलेंस टा और एस्केलेशन हे परिबो नेक्स्ट सर पब्लिक की एटा हमर स्ट्रांग अपील रहिबो जे आईन ता बाटे रे जीवो किंतु लोक माने कोनोसी इमोशनल बेसिस रे आसी कि वायलेंस कोनोसी प्रकार आईन हाथ को नेबे नहीं सर थर्ड पॉइंट रे हम ए जिंस करबी जे पीड़िता फैमिली रो फैमिली से कंसल्ट करबी जे सेमाने कि जे झियो वर्तमान सुरक्षित बा हॉस्पिटलाइजेशन अछि सरकार तांको तरफ सब प्रकार चेष्टा करूछंती सेमानक सहित एज ए गाइड का एडमिनिस्ट्रेटर में छिड़ा हेबी जेंते सेमानक कोनोसी मुहूर्त रे न लागु जे जिला प्रशासन हम पाखरे नाही बोली फर्स्ट पॉइंट रे ए एटा इंटरनल मो उते पता लगेबी जना चेष्टा करी जानिया पई जे किछरा असामाजिक तत्व थिबे जो माने कि ए जिंसटा करी इंस्टिगेट करिया पई चेष्टा करूथबे सेमानकर कोनोसी निहित स्वार्थ एतरे थिबो एटा सर जदि मु पता लगे परछि जे सेमानकु मध्यम केमिति ता भितर एलिमिनेट करि परिबी सो दैट सिचुएशन गोटे कंट्रोल ले रहि परिबो सर ठीक जिंस या जदि मते लागु छी जे सेपरी सही स्थान रे विदिन किछि समय भितरे बा नियर शॉर्ट टाइम रे कोनोसी प्रकार गोटे सीरियस इश्यू हबा को बा वायलेंस हबा को जाउची ताहले मु एज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सट्रीम केसेस रे 144 लगेया पई मध्ये सर डायरेक्शन देई परिबी जदि मते सेमति लागु छी जे एक्सट्रीम किछि वायलेंस हबा को जाउची तो ओके ठीक अछि सो देखो ए भला केस रे माने कोन हमरो एक्शन माने जने एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब कलेक्टर हिसाब रे कोन इमीडिएटली एक्शन तबे नै परिबो इमीडिएटली एक्शन होची जे न जदी सेही केसटा जोटा हेइथिला इमीडिएटली कोन करा जेतिला ना बालेश्वर मेडिकल को निया गला पुनी बालेश्वर मेडिकल रो एम्स को निया गला तेनु एटा निहाती इमीडिएट एक्शन होची जे एंश्योर द स्टूडेंट रिसीव इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और ट्रॉमा केयर then provide protection and emotional support to the victim and her family तापरे सेठी जहां भी हमरो माने एविडेंस थिला जेमिति कि से जोटा कि जो बोतल टा हमरो पेट्रोल पड़ीथिला किबा जो मैच बॉक्स हमरो लगेई थिले तो सेही सबडा को इमीडिएटली सील करिया दरकार फॉर फ्यूचर हमरो इन्वेस्टिगेशन पे सो सील रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड सीसीटीवी फुटेज फॉर एविडेंस प्रिजर्वेशन ठीक है म्यूट करो ओके okay
so एटा करि परिबो मेजर कोन नै परिबो ना immediately you can order the police to file an FIR and start independent investigation, suspend the accused faculty if the prime facie evidence exists. जदि तमर immediately हमर कोन करा गला तमे देखिछ जे सेही हमर जे faculties थिले तांकर HOD को सस्पेंड करा गला along with the principal of FM college को भी सस्पेंड करा जायछि काहे कि ना से माने immediately कोनोसी action नै नथिले. If the institution negligence is suspected, immediately inquiry against the college management. Public को कौन हमें जो address करिया दरकार. So address the media transparently, but sensitively to avoid माने any हमरा कोनोसी law and order situation को handle जमती करी हबो कारण media immediately सब जिंस को TRP पाई breaking news पाई use करिवे तेनु sensitively you should handle the media. Appeal the public and the student body to maintain calm and cooperate with the investigation. Long term measure रे कोन ना immediately जो केस गुडा को जोटा हैला काहे कि पर्यंत गला कारण जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी थिला ICC as per post अनुसार जोटा थिला तो सीटा जो माने जो कमिटी रो रिपोर्ट टाकू से माने इमीडिएटली कोनोसी एक्शन नै नथिले. ओके तो आमे इंश्योर करबा सेति पय एबे ओडे नुवा स्कीम भी आछिछि. ओके से नुवा स्कीम रो ना कोन शक्तिश्री ओके शक्तिश्री हमर ओडे हमर नुवा माने एबे 2 दिन तळे ही स्कीम आछिछि जे प्रति कॉलेज की यूनिवर्सिटी लेवल रे हमर प्रॉपर कंप्लेंट कमिटी हमर रहिबो जोटा कि इंटरनल कंप्लेंट गुडा को वेरीफाई करिवो. सिमिलरली हमर डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ऑडिट ऑफ द हरासमेंट रिडक्शन मैकेनिज्म इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहिबो. तापरे ऑर्गेनाइज जेंडर सेंसिटाइजेशन ड्राइव इन कोलैबोरेशन विथ द यूनिवर्सिटी एंड NGO एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रू हमें निहाती एक्नॉलेज करिवा दरकार सिस्टमिक फेलियर that lead to the extreme step. Even if जो ministry मानन को टैग करा जाइथिला हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री और सेंटर रो और हमरो CMO समस्ते already they have taken the moral responsibilities that this is extremely माने unfortunate and जो systemic failure that lead to the extreme step पर्यंत हमरो गला. Okay, so finally reaffirm the administration commitment to justice, human safety and institutional accountability. At least तमे एतिकी आज माने सब कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिसाब रे इमीडिएटली एतिकी एक्शन तमे नबा. और जहां भी हमें लॉन्ग टर्म रे हमें कहबा जे तांकर सेफ्टी सिक्योरिटी पे हमें जो जेमती शक्तिश्री हमरो स्कीम्स आसी से अनुसार वुमेन सेफ्टी पर मोर फोकस दिया होची से गुडा को तो नेक्स्ट स्टेप भूल हैला पर हमें ठीक करिया के ट्राई करछो किंतु हमर कोन ना एटलीस्ट इमीडिएटली गोटे एक्शन माने इन्वेस्टिगेशन हे के एक्शन निया जाय कि एई केस टाकू हमें गोटे बेटर वे रे हैंडल करि पाइबा. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो जोटा कि पुरी रो स्टैम्पेड केस थिला. तो सपोज ड्यूरिंग रथ यात्रा फेस्टिवल इन पुरी a stampede occurred near Grand Road due to overcrowding and poor barricading. Several people are injured and there are reports of mismanagement by the local authorities. So as a sub-collector and ADM in charge of the festival coordination, how will you respond to the situation both immediately and in long term? तो केमिति तमे long term हो immediately हो केमिति तमे ताको respond करिवो. एंड एटा को मु आउट के बुले की कहूची जे जने एडीएम और कलेक्टर केमिति हैंडल करिवो एंड यू आर द PRO फॉर द रथ यात्रा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फॉर द रथ यात्रा. सो हाउ विल यू एड्रेस द मीडिया को केमिति एड्रेस करिवो. हाउ विल यू गिव द इंफॉर्मेशन दैट 3 people are already died in this lost their life during this stampede. So how will you address the media? केमती करिवो. सो आज ए फर्स्ट को आज ए PRO केमती करिवो. देन
as a district magistrate or officer केमती करिवो ओके तो आई थिंक मु समस्त को कहि परिबे कि मु अनम्यूट करिछि If anyone want to make their points, they can tell. Sure. So, जो मैंने कल के suppose कहा interview अच्छी, वो muted. Unmute ये पहला. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Okay. क्लाबिनी को PRO हिसाब रे कौन करिवो? भाव किए कहियो? को हाँ ये PDF सब आप रे अपलोड होची ओके जहाँ भी हमें आगुरु डिस्कशन करिचे जो सब गुड़ा अपलोड हेची ओके सर फर्स्ट प्रायोरिटी रहबो तो जो माने से जगह अफेक्टेड हेचोंदी से माने मेडिकल टीम मोबिलाइज कराए कि क्राइसिस मैनेजमेंट टाइम जो टीम थिबो डिस्ट्रिक्ट रो माने रथयात्रा स्पेशल कराए तो से मानो को एक्टिवेट कराए जबो जे से मानो नै कि हॉस्पिटल शिफ्ट कराए जबो आ टू देयर सिचुएशंस जदि आईसीयू दरकार कि माने ग्रेटर ओके सेकेंड है जो जो थिला कि ये प्रॉब्लम टा है माने पुलिस नहांती कि सेठी जो सीआरपीएफ रहबा कथा दे नहांती तो से मानो सेठी कि माने डाइवर्ट करा जो किसी लोगों को जे से सिचुएशन टा को हैंडल करा जो को जदी इनफ्लो से जगह अधिक अछि तो सेटा को कंट्रोल करा जो बैक एंड रे माने पछपट जो एंट्री पॉइंट्स उडा আছে सेगडा को कंट्रोल करा जाय इमीडिएटली ताको अरेस्ट करिया पय तापर आउटफ्लो टा को जो व्हीकल्स अछि ये अछि सेगडा को क्लियर करा जो सेटू से एरिया रो जो जाय प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर एतो करा जिवो तापर माने लॉन्ग टर्म ईयर हमें करि परिबे छै माने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पई गोटे वन वे फ्लो ट्रैफिक में अलाउ करिबा माने गोटे पर ट्रैफिक वेरी गुड प्रॉपर बैरिकेड अलाउ करबा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज करिबा ओके वेरी गुड ओके सो देखि दबा हमें केमती एटा को तमे हैंडल करियो सो फर्स्ट कथा ला suppose you are the ADM or DM for the Puri so rush to the side and coordinate with the emergency service team maybe ambulance la police la fire department then ensure quick evacuation of the injured person to the nearest hospital tame Puri hospital को immediately nei paribo Puri hospital तो already गला परे 3 जनकर डेड बोली डिक्लेयर करा गला तापरे immediately activate the disaster response protocol okay if applicable NDRF हला कि ODRAF हला तो टीम को तमे दे परिबो responsibilities दे परिबो and issue public announcement to control the panic and restore calm कहि परिबो कि हां ए भडा हेछि no need to panic तो calmly tame you can handle the crowd second katha la investigation and accountability so order a preliminary inquiry into the cause was it barricade failure or crowd mismanagement or lack of coordination सेठी पुलिस थिले ना नाही कि बैरिकेड हटे दियातला कि ब्रेक करी लोक माने से एरिया को जाइछंती तो सेही preliminary inquiry you should do then suspend or remove the negligent official if necessary और तमे जानिचो जो माने थिले ऑलरेडी किछि लोकन सिटी सस्पेंड भी करा जाय छै इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एंड जुडिशियल अथॉरिटी फॉर इम्पार्शियलिटी तमे जानिचो जे इमीडिएटली हमर कोन करा गला ना सेठी हमर भुवनेश्वर जे डीएम थिले तांको ट्रांसफर करि निया जाय छै एंड जे हमर पुलिस को भी हमर एसपी को हमर चेंज करा जाय छै तो ए सब गुडा को इमीडिएटली इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और जुडिशियल अथॉरिटी फॉर इम्पार्शियलिटी पई तापरे हमर पब्लिक कम्युनिकेशन पई कोन होल्ड ए प्रेस ब्रीफिंग टू शेयर द वेरीफाइड फैक्ट्स
एंड अपील अगेंस्ट एमिति जो रिमर हमर धर कि कहूँ जे नहीं 10-15 जन मरी जाइछन्ती कि डेथ हे जाइछि सेमानकर तेणु तमे गोटे क्लारिटी तमे कह जे नहीं हमर मेडिकल अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिपोर्ट so this incident is very unfortunate and as per the medical report 3 people lost their life. Okay, जोटा कि exact figure तमें कुहा तंको बोले प्रेस ब्रीफिंग टू शेयर द वेरीफाइड डाटा तो मेडिकल जहाँ रिपोर्ट दो तम मने जदि किए जने आसिक तुमको कहि दोछि नहीं 10 जनकर डेथ हेछि तमे इमीडिएटली सेटा कोनी यू जस्ट वेरीफाइड विथ द मेडिकल टीम जे डॉक्टर कोन हमर लेखि देछन्ती वेरीफाइड करके देछन्ती सो you should stick to that data and visit the injured person and assure the family for compensation and support. Maintain a transparency to rebuild the public trust. तापरे long term पे कौन करी परिबो ना crowd management plan, AI based monitoring, route redesign जेमती जने माने कहिले जे one way तमे देखो आमे जाउचे तिरुपति जाउचे तो केते गोटे हमरो सिस्टमैटिक वे रे तमे गोटे पटे पसिल आ गोटे पटे तमे बाहर गोटे सिस्टमैटिक वे रे किंतु एबे देखो तमे पूरी जगन्नाथ मंदिर जाओ इज वेरी डिफिकल्ट टू माने मंदिर दर्शन करिया बहुत डिफिकल्ट माने ठीक रे क्राउड मैनेजमेंट सेठी भी हमरा किछि ऑप्शन जो माने कि पैसा नै कि हमें पैसा दिया हमें नै कि बुले के आनि के देखे देबो माने बहुत मिस मैनेजमेंट होची गोटे प्रॉपर जेंती वन वे रे जिबा कथा सेमती ठीक रे होन सो रूट रीडिजाइन हबा कथा बेटर फेंसिंग हबा दरकार हमर एआई बेस जदी कोनसी जगह रे हमें कहले जे हमर एआई बेस मॉनिटर होतला हमर जोड़ा कि हमें कहचे ड्रोन लागितला फिर भी एते हला पर भी हमर प्रॉपर जो सर्विलांस सिस्टम रहबा कथा जोड़ा कि हमर कंट्रोल रूम जो थिरे तो सेमाने तो देखिले जे ठीक मिस मैनेजमेंट हला इमीडिएटली तो सेठी हमर से जगह रे पहुंच के क्राउड को कंट्रोल करबा तेनु प्रॉपर मॉनिटर आउ कंट्रोल रूम रो से मॉनिटर हे पारे तो कोड ना कोड हेटा फेल हेच तो इंट्रोड्यूस प्री रजिस्ट्रेशन एंड जदि एंट्री सिस्टम फॉर दर्शन तो ए केस रे हमर कोन ना जो हमें कहचे ओने सिस्टमैटिक वे रे देखो ता पर एते माने सिस्टमैटिक हला से जो हमर कहले रूट डिजाइन गोटे पटे एंट्री करबा गोटे पटे बाहरिबो तमरो माने सुना बेस बेल को देखो किछ तो सेही जो जिनसडा भूल हला पर सब बेला हमें करूचे तो हमें कहले जे हमर कोनोसी सेक्सुअल हरासमेंट केस रे कोनोसी माने सब इंस्टीट्यूशन रे हमर ओटे इंटरनल कमिटी रहिबा दरकार और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हबा दरकार तो सेटा सेही समय रे काहे कि इमीडिएट एक्शन निया गलानी जे एते पर्यंत जने था लाइफ को माने सैक्रिफाइस करिया पई काहे कि गला तो सब बेले वी आर टेकिंग एक्शन आफ्टर द माने जो क्राइम टा हैपन हला परे किबा जो भूलटा हला परे ही हम स्टेप्स नोच कंडक्ट मॉक ड्रिल तो मॉक ड्रिल भी हमर रहिबा दरकार जदी ए बेले सिचुएशन होउची तो केमिति हमें ताको सिचुएशन को हैंडल करिबा capacity building workshop for staff and volunteer and install real time crowd sensor and CCTV coverage at sensitive point then eita ote rochi and next hochi emphasis the public safety takes precedence over rituals speed तो VIP मानक पई ए सब पई जो हमर कोन ना प्रॉपर माने स्टेप्स हमर नवा निहते दरकार सो learn from the tragedy and adopt a zero tolerance policy for negligence during large religious gathering एटा केवल रथ यात्रा नहीं तमरा पूर्वरु 3-4 मास पूर्वरु तमरा जोठी गोटे गैदरिंग पाखापाखि 50,000 गैदरिंग उत्तर प्रदेश रे जने रिलीजियस गुरु भाषण दउतिले तमे देखिछ जे से दौड़ी की जाउतिला समस्त तांकर पाद धुली नबा पई समस्त माने दौड़ीबा जगु सेठी भी लोकंकर डेथ हेतला तो सब बेले ए भले सिचुएशन होउची तो क्राउड मैनेजमेंट केमती करा जिवो सेटा भी गोटे बिग चैलेंजेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन तो ता पई तमे एटा होई परिबो ओके Okay, so now coming to our question हमें करिबा हम पाकरे 5-6टा क्वेश्चन अछि सो मु सेति बाय टिके फास्ट वे रे जाउ जे ओके सपोज एटा गोटे हमर रियल माने सिचुएशन जो थिरे कि ऑलरेडी ए बेला सिचुएशन रे पिला पढी छंती आ ए बेला सिचुएशन दे कि जाई छंती
Suppose you are posted as a Tahsildar, a ruling party MLA calls and asks you to allot a government land parcel to his relative. जेहेतु से पावरफुल सपोज एमएलए होंतु कि मिनिस्टर होंतु तुमको फोन करके कुआ गला जे तमे ए लैंड टा तांका रिलेटिव का नाम रे करो जदि न करिवो he hints at transfer if you disobey. So what will be your response? तमरो response कौन रहइबो? Even if तुमको माने ट्रांसफर करा जिवो and life threatening भी तुम पई अछि. So then how will you handle the situation? सर फर्स्ट है से जो एमएलए कॉल करिवे ता कॉल टा रिसीव करिवे आपण तांको ओके बोली कहबे जे से आई एम डूइंग इट तापर तांको कहबे जे जहां को नारे करियर अछि तांको कहबे सब जगह डॉक्यूमेंट नेकी आसीबे से फर्स्ट जिंस तापर डॉक्यूमेंट नेकी आसला पर हम देखिबे से डॉक्यूमेंट रे कोन कमी अछि ताको हाइलाइटेड करबो तापर ऊपर अथॉरिटी की प्रोजेक्ट करबो जे ए इश्यू सब अछि कारण से तो जणे न ना जे रूलिंग पार्टी एमएलए एला पर भी तादर बहुत सारा लूप होल्स थिबो जोटा को आमे माने आम फेवर रे एक्सप्लॉइट करि परिबा जे एई सब कारण जो आमे लैंड को अलॉट करि परिबा जदि अलॉट करूछु त तापर मिनिस्टर्स की सेतरे फसिबे तो मिनिस्टर को सेतरे आमे लूप रे नबु तापर सरला परे जदि सेतरे भी न होला तथापि भी जदि इफ इट इज हैपनिंग के मते करिया पड़िबो देन ब्लैटेंटली आमे डिनाय करि परिबो कि असुविधा नै कोटिंग रूल्स रेगुलेशंस हम मना करि परिबो कि असुविधा नै ओके ठीक अछि माने पर्टिकुलरली आमे जो भला ए जो सिचुएशन ए कोन करिवो ना तमरो आज तहसीलदार तमरो प्रथम ड्यूटी कोन प्राइमरी ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ नॉट अंडर पॉलिटिकल प्रेशर हमरा एबे तमरा से जो आमे कहउथिले लास्ट क्लास रे भी डिस्कशन करिथिले जे हमरा बीएमसी रे एडिशनल तहसीलदार को जाई कि गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो सपोर्टर माने बाड़े थिले और फिजिकली असल्ट करथिले तो सेही भले जो केस गुडा का हमर जो रहउची तो सेही थिरे माने you should uphold to the constitution and act according to the law not under political pressure. Okay, so if MLA asks तुमको to allot the government land to his relative without following the due procedure, so you would politely inform him that such act will be illegal and against my service ethics. तो कौन करिवो ना request for proper documentation जे proper जो हमरो तमे ऑफिशियल वे रे जहा परिबा I can help. If the relative is eligible under any legal scheme, then you should ask them to apply through official channel. Maintain the record of the communication for transparency and accountability. Report the pressure. जदि तमे कहिला पर भी तमे देखला जे नै मु डॉक्यूमेंट मागिली डॉक्यूमेंट्स भी लीगल अछि एंड आल्सो से मानु नाहंती तो you can report the pressure to your superior officer or the collector as per the protocol. Then stay calm and respectfully. While refusing the illegal instruction, you should act माने तांको कथा तमे राजी हवा कथा नै एंड फाइनली जदि से ट्रांसफर पई कहू छंती as a retaliation, so if a transfer comes as a retaliation, so you should consider it as a part of your public service. So personal gain cannot come before public trust. Okay, जे नाही मु भुवनेश्वर छाडी कि मते यदि मालकानगिरी मायावादी एरिया को पठोथंदी, you should be ready to go to that interior area also because तमे सेटा पाई ही तो से सर्विस करिस न. Okay, the civil service must work as per the rules and in public interest, even if it involves personal cost. जदि भी तुमको ता पई पेन नबा को पड़िबो और पर्सनल कॉस्ट से जदि सेठी जिबा को पड़िबो, you should ready to go to that place. Okay, but you should not compromise with your ethics, rules, regulation and public interest को तमे केबे भी compromise करिबो ना. Okay, so इटा गोटे हमरो टॉपिक आ गोटे हमरो रहउची ए जो हमरो ओटीएटी परीक्षा काली हमरो होतला एंड तमर देखु जे फेसबुक रे सब क्वेश्चन बोलुतला ताको कैंसिल करा जाय छै क्वेश्चन आउ थरे री एग्जाम हबो. ओके, सपोज ए बेला सिचुएशन रहिला यू आर
made observer for a recruitment exam and you get a tip that someone has leaked the paper. So what step will you take immediately? कौन हमें steps नबा immediately? Okay, anyone want to make any points? Cool. sir Hmm. सर जदि सेमती कोनोसी जिंस संदर्भ को आसुची प्रथम सर तुरंत साइबर सेल द्वारा एग्जाम टी तो सर स्थगित करा जिवो किंतु तुरंत साइबर सेल द्वारा चाहे से जे कोन अकाउंट हे थाउ ताको सर स्पॉट करी की ताको कस्टडी की नबाटा प्रायोरिटी बेसिस रे रहिबो सेकंड सर हमें ए जिंस चेष्टा करिबा जिनता ताको उदाहरण जनक कोटे ताको पनिशमेंट मिलिबो अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता जोटा कि हमर एक पब्लिक एग्जामिनेशन चीटिंग बिल जो पास हेछि सर तारी अगेंस्ट रे we ensure that ताकू stringent punishment जेमति मिलि परिबो कोन प्रोविजन अछि सेथिरे केते फाइन केते वर्ष जेल सॉरी सर मोटे एग्जैक्टली माने पके परनी ए समय रे ओके ओके ठीक अछि आगे हां सर नेक्स्ट हमें ताको नेक्स्ट सर एंश्योर करिबा जो को मीडियम दे के से जिंसरा ता पाखो को आसी छी से तो एमिति नहंते जे डायरेक्ट नहीं आसीथिबे वो मीडियम दे के ऑफिशियल वेबसाइट ता पाखो को आसी छी किंबा से जो जिंसरा चेराटा केते बाट पर्यंत लंबी छी सर ताकू पनिशमेंट दबा सहित से जिंसरा रूट कॉज पाखरे पहुंचबाटा भी हमर प्राइम टारगेट हवा दरकार सो दैट फ्यूचर रे सेमिति कोनोसी जिंस न हबो ओके परीक्षार्थी मान को मध्य हमें गोटे भरोसा दे परिबा जे फ्यूचर रे आपन को एग्जाम मेरिट बेसिस रे हबो ना कि कोनोसी प्रकार अनियमितता बेसिस रे सर लॉन्ग टर्म बेसिस रे हम ए जिंस करि परिबा कोनोसी जेमति आपन को टीसीएस हे गला भरोसा योग्य गोटे संस्थान ता द्वारा मध्य हम एग्जाम कंडक्ट करे परिबा और सर जोटा में कोचे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जोटा कि वर्तमान समय रे एग्जाम क्वेश्चन पेपर हो बा डाटा को संरक्षण करिया पे गोटे बहुत भरोसा योग्य टेक्नोलॉजी बोली विवेचना करा जाउची हमें सर सही प्रोसेस रे मध्य एग्जाम टाको कंडक्ट करे परिबा आ गोटे कमिटी बसेया पड़िबो जो कमिटी की डेडिकेटेडली इन्वेस्टिगेट करिवो जे कोन कोन लूप होल रहूची जोथि पय कि ए जो ऑफेंडर माने बार बार ए भला काम करिया पे से माने सक्सेस होचंती और से कमिटी रो रिपोर्ट अनुसार हमको ईच एंड एवरी लूप होल को जाय कि छुईबा को हबो ताको बंद करिया पे पड़िबो भाबु जे तमे एई सब दिगरा पदक्षेप नेबा ताले आगामी दिन मान करे परीक्षा को हमें सुपरिचालित करि परिबा Okay. So as an observer, our first duty is to ensure the integrity, fairness and transparency of the recruitment exam. जदि तुमको एमती किछि मिलिला जे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लीक्ड आउ बाहर बुलुची क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन गुडा को सो तमे जनोठु सुनिलो सो फर्स्ट you should not ignore that one or panic भी हबनी. So what will the immediate action or responsible steps you should take? Verify the information जे इटा रियली जो न्यूज़ टा केते दूर सत्य केते दूर मिछ और it is a rumor or it is a real fact सेटा चेक करिवो. I will not act on the rumor, so I will immediately inform the exam superintendent and district collector honto a concerned higher authority for verification and guidance. प्रथमे वेरीफाई करो जे रियली पेपर टा लीक हेच कि नै तापर सेकंड secure the examination material, so you should ensure the sealed question paper are untouched and check for any sign of tampering जे proper seal हेच कि नै tampering हेच नै तापर maintain confidentiality to prevent chaos or further leak. So I'll keep the matter confidential while escalating to the higher authority. हमें एमिति क्वेश्चन पेपर लीक हे जे ठीक अछि हमें लेट द एग्जाम चालू छी तमे कॉन्फिडेंशियल रखी की हायर अथॉरिटी को ओके एस्केलेट करिवो एंड फाइनली एग्जाम पर तमे देखिलो जदी डिटेल माने प्रूफ र सह ओडे डिटेल रिटन report of the incident and action taken while stamping for the accountability. And finally जदि एटा कंफर्म हैला ताले एग्जाम को कैंसिलेशन करो जोटा कि एबे तमे ओटीओटी परीक्षाटा हमर कोन कैंसिलेशन हेछि एंड रीशेड्यूलिंग भी हमर हबो. सो इन कंसल्टेशन विथ द एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी तमे आउथरे देखो रीशेड्यूलिंग करिवो. If necessary, coordinate with the police and vigilance department to trace the leak
and take legal action against them. Okay, initiate the legal action. ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କଣ upholding the sanctity of the public recruitment is non-negotiable. Even a single unfair appointment can undermine the public trust in the system. Okay, तो ये सब जिनिस गुड़ाक आमे okay, so our last question तमरा fake news को नहीं के कारण fake news जोटा कि हमारा most केसेस रे हमर देखु जबे फेक न्यूज हला फेक वीडियोज हला तमरा रश्मिता मानधान को केस रे तमे देखिथिबो जे केमिति हमर डिफेक्ट टेक्नोलॉजी यूज करी कि तांको वीडियो को मैनिपुलेटेड करा जायथिला तो एई भला केस रे किबा तमरा फेक न्यूज को स्प्रेड करी कि तमरा केमिति तमे देखु जो जे इवन इफ लास्ट इलेक्शन डे तो केमिति बायस करा जायथिला पूरा इलेक्शन प्रोसेस को जेमती जने चीफ मिनिस्टर को आमे वीडियो रे देखुतिले जे हां दे इंटेंशनली ट्राई टू माने गोडरे गोइठा मारिबार वीडियो देखितिले किंतु एटा का हमर कोन ना पर्टिकुलरली ताको मॉडिफाइड करी कि मैनिपुलेटेड करी कि वीडियो डा बना जाउछि सो जो आमे कहउछे फेक न्यूज पोस्ट जोडा रहउछि a fake news post goes viral and communal tension erupt in your district. Misinformation is spreading fast, so how will you handle the situation ethically and effectively? को भलिया तमे ताको ethically and effectively handle करियो. Okay, so ए केस रे हमर कोन करा जिवो ना in such situation sensitive situation हमर primary responsibility as a civil servant to protect the public order. तो जेमति law and order रा इशू न हो किंबा communal tension जेमति न आसु so promote communal harmony, uphold the constitutional value. तो कौन कौन तमे एक्शन नबो फास्ट कथा हला ओके सो फास्ट कथा कोन ना alert the police and district administration to monitor and control any outbreak of violence and unlawful gathering. तमे immediately तमरो alert करो पुलिस मनन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि unlawful gathering न हो कि outbreak of violence जेमति न हो तो सेति पई maybe 144 सेमन लगे परन so deploy additional security so in sensitive area maintain peace and prevalent escalation तापरे misinformation का में कॉर्ब करिबा identify the source of the fake news with help of cyber cell किंबा हमें कहले जो हमरा फैक्ट चेक यूनिट अछि तो से सब गुडा करे हमें जो पीआईबी रो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रो फैक्ट चेक यूनिट और साइबर सेल थ्रू रे हमें ट्रैक करिबा द सोर्स ऑफ द फेक न्यूज then request the social media platform to take down the content immediately okay and issue an official clarification debunking the fake news through credible government handles and social media जो एठी हमरा पीआरओ जो माने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहिबे गवर्नमेंट रो से माने जाय कि क्लैरिफाई करिया दरकार एंड गोटे प्रेस रिलीज करिया दरकार जे नहीं एटा हमरा फेक न्यूज बोली हमरा क्लैरिफाई करिवा निहाती दरकार okay and amra kon kara jibo na call for a peace meeting with religious and communal leader to appeal for calm and discourage hate speech use local influencer and teachers to spread factual message and counter remarks and finally amara legal measure kono na file FIR against the originator and those spreading the fake post under IT Act and IPC section related to hate speech and public mischief and amara kono na launch awareness drive among the danger of fake news okay तमरा फेक न्यूज को नहीं कि भीमा करो गारो रॉयत हेतला फेक न्यूज को नहीं कि हमरो मेनी टाइम्स तमर रॉयत हमर दिल्ली रे भी हमर हेतला सो प्रपोज डिजिटल लिटरेसी कैंपेनिंग इन द स्कूल एंड कॉलेज set up a district level monitoring cell to detect and counter fake news in real time basis na me kare so such incident test the moral fiber of both administration and society so our goal kon hoya darkar na you should act swiftly fairly and sensitively without targeting any community but ensuring justice and order okay so eta tama ei point uda ko tame koi paribo okay
आ गोटे केस स्टडीज हम रखिथिले वीडियो ऊपर Suppose you are a block development officer, a local contract offers you bribe to overlook poor construction work in a government housing scheme. So he say he will share the profit and donate to a local temple. How? What will do? यदि तुम वीडियो अच्छा लोकल कॉन्ट्रैक्टर कहूँ जे नहीं सर 10% पीसी दिया जिवो कोटी टंका रु 10 लाख आपन को दिया जिवो एंड जो घर काम होइछि पुअर काम होइछि सेडा को आपण नजर अंदाज करंतु आ फाइल को अप्रूवल कर दियो प्रॉफिट भी शेयरिंग करा जिवो तो तुम कौन करिवो ओके ए बने हमर जो करप्शन रिलेटेड जदी हमर गोटे केस स्टडीज आसिला तो सही केस रे कौन करि परिबो एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सो आई एम इन यू शुड ensuring the quality and integrity and public welfare scheme accepting bribe directly who indirectly who so it is violation of both legal and ethical standard तमे प्रथमे कौन करिवो if a contractor offers a bribe to overlook the substandard construction work so first you should reject the bribe outright and make it clear that such unethical behavior will not be tolerated तमे ताकू threatening जे how dare you to give me bribe किबा मु तमरो even if license भी cancel करि परिबे so I will initiate a formal inspection for a housing project to document the poor construction work if there is clear evidence jodi achi I will take a action as per the contract clause which may include penalty ho blacklisting ho filing a report to vigilance department if necessary okay so and I'll document the incident and for the higher authorities for further investigation pending my commitment is to public interest not personal gain so poor construction compromise the safety of the vulnerable family जे रहउथिबे तमे एमिति देखुछो एटा होछि प्रैक्टिकल केस काहे कि तमे देखुछो जे जो एबे डैम जो हमर जो ब्रिज गुडा को माने तयारी सरीनी ऑलरेडी कोलैप्स हो जाउछि ओके पर्टिकुलरली तमरो लास्ट ईयर भी ओपीएससी रे पचरा हितला जो बमिखाल ऊपर जो हमर ब्रिज ता थिला सरीनी 6 मास 7 मास रा कंस्ट्रक्शन परे माने सेठी इनागुरेशन हेनी से ब्रिज ता कोलैप्स हेनी हमर एबे बिहार रे भी गोटे ब्रिज हमरो कोलैप्स हे जेछि इवन इफ गुजरात में जो ब्रिज हमरो कोलैप्स हेछि ओके सो मेनी माने थ्रू आउट इंडिया रे ए भलिया पुअर कंस्ट्रक्शन वर्क जोगु आ सेगुडा केमिति फाइल क्लियर करा गला so that means it involve which corruption involve अछि तो सही सिचुएशन में तुम कौन करिवो तो एमिति एथिकल डायलेमा क्वेश्चन तुमको पचरा जाई पारे तो ए भलिया तुम गोटे भाबी परिबे जे हम एमिति कहि परिबे ओके सो एटा गोटे हमर क्वेश्चन जोडा कि हमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जोडा का हमर तुमको पचरा जिवो तो केमिति तुम एथिकल बेस्ड क्वेश्चन गुडा को हैंडल करिवो तो आमे केते गोटे केस स्टडीज देखिले ओके आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होछि जे सपोज जनकर 4 वर्ष कि 3 वर्ष गैप अछि आफ्टर द ग्रेजुएशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस और डिफरेंट एग्जाम पई आउ तमर 3-4 इयर्स गैप्स अछि तो तुमको पचरा गला कि तुम कौन करूथला लास्ट 3-4 इयर्स भीतर तुम कौन आंसर दो एटा तो जदी जनकर गैप अछि डेफिनेटली पचरा जिवो सो व्हाट शुड बी योर आंसर सत कथा कहि दो जे नै मु 3 वर्ष 5 वर्ष जनकर 7 वर्ष सपोज गैस तो कौन 7 वर्ष ला तुमको लागुनी तुम पाठ पढी कि आर वेस्टिंग टाइम तुम केवल गवर्नमेंट जॉब पछे दौड़ तुम एंटरप्रेन्योरशिप करि परथान तो तुम हम समथिंग हमर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन करि परथान तो तुमको लागुनी यू आर वेस्टिंग टाइम एमती काउंटर क्वेश्चन तुमको पचरा जिवो तुम कौन आंसर देबो तारा वो हेलो सर को हाँ सर ए प्रश्न तो समस्तंकर सर वेरियस उत्तर आसी पारे मु सर मो पर्सपेक्टिव रो आंसर दे परिबी को आज्ञा सर यस मते जदियो 6-7 वर्ष लागि छि ग्रेजुएशन पास हैला परे किन सर म एमिते ओटे बैकग्राउंड रो आसुची जोठी कि सिविल सर्विस हो एजुकेशन हो से विषय रे कोनोसी प्रकार अवेयरनेस केबे भी नाही
आज पर्यंत तो सर मते सिविल सर्विस कौन ए एग्जाम विषय जानिबा पई लागि गला 24 वर्ष कि 25 वर्ष में जानिले जे एग्जाम कौन तार प्रोसेस कौन आउ केमती कौन जाय कि से एग्जाम क्षेत्र सर पहुंची हबो आउ अपन सर जेमती कहले एंटरप्रेन्योरशिप करि परिबा बा इकोनॉमिक करि परिबा ये सर से दिगरे भी आमे चेष्टा करिछि किंतु सर जत हम सिविल सर्विस विषय धीरे धीरे जानिली तार सिलेबस को देखिली मु जानिली जे एई दिगरे हमें कंट्री रो इकोनॉमी को डेवलपमेंट आडू को नहीं परिबा आ गोटे मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी मध्ये गठन करि परिबा सर बेले बेले एमिति कि मनरे प्रश्न आसे जेते विलंबरे मु आरंभ करिछि पाइबी कि नाही सर एम प्रश्न भी मनरे आसीछि किंतु ए प्रोसेस प्रिपरेशन थ्रू रे मु बहुत सारा महापुरुषों जीवन जानिली जेमती नेल्सन मंडेला हे गले आपनकर अब्राहम लिंकन हे गले जो माने के तांको जीवन रो लेट स्टेज रे सक्सेस पाइचंती कारण तांकर मोरल प्रिंसिपल सेतिक मात्रे स्ट्रांग थिला आउ सेइथि पय सर मु भी स्थिर कली जे ए प्लेटफॉर्म ते मते गोटे मोर जो विजन अछि ताकू इंप्लीमेंट करिवार बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोछि किंतु जदियो मोर पाठ पढ़ा सारी की मु ए विषय देरी रे जानिछि किंतु मु केबे भी मोर निजर जो लर्निंग प्रोसेस ताकू सर बंद करी नाही समय लागिछि सत किंतु मु आज से जगह पहुंची पारिछि जो मो सोसाइटी की किसी कंट्रीब्यूट करि परिबी जहां मते सोसाइटी देछि मु से ताकू पे बैक करि परिबी तेणुकर टिके विलंब हेले भी मु सर लक्ष्य रे स्थिर अछि एवं विश्वास आशावादी अछि जे दिगरे मु सुनिश्चित से जगह पहुंची परिबी बोली ओके आउ के कोन कहउछो तो एटा गोटे क्वेश्चन जो मानकर ईयर गैप अछि मोर देन 3-4 इयर्स जदि अछि तो कौन हमर कहि परिबा पई ओके तो एमती गोटे कहि परिबो जे धर कोच डू यू थिंक दैट टेकिंग ए गैप ईयर इज ए साइन ऑफ इनडिसिसिवनेस और पुअर प्लानिंग हम कहबो जे तमर प्लानिंग तमे कोन फ्यूचर रे करिवो किछि ठीक करिन तमर प्रॉपर प्लानिंग नै बोली सपोज तुमको पचरा गला तो कहि परिबो जे नॉट नेसेसरीली टेकिंग ए गैप ईयर कैन सीन आइदर as indecisiveness or purposeful planning depending upon how you utilize that time in many cases जो मैंने candidate तुम जंती कहिलो take a year gap to prepare the competitive exam gain clarity about the career path handle the personal responsibilities कांकर घरे suppose problem अछि so you can tell कि नहीं family problem थिला कि I have some personal फैमिली इश्यू थिला तो सेइथरे तमे किंतु कंस्ट्रक्टिवली तमे को ओके तो आई यूज कंस्ट्रक्टिवली रिफ्लेक्ट द मैच्योरिटी सेल्फ अवेयरनेस एंड एबल टू प्रायोरिटाइज द लॉन्ग टर्म गोल ओवर शॉर्ट टर्म कंफर्ट सो इफ द गैप इज मार्क्ड बाय तमे लैक ऑफ डायरेक्शन कथा कहछो इट इज जस्ट पुअर प्लानिंग तो व्हाट मैटर इज वेदर द इंडिविजुअल एमर्ज मोर फोकस skilled and resilient. Personally, I say year gap as a phase of strategic investment in our future. तमे कहि परिबो जे मु फोकस वे रे मोरो प्रिपरेशन को हमें जो इन्वेस्टमेंट करिया को चाहूथली so this time what I am कहू छै strategic investment in one's future especially when you are accompanied by discipline learning and self growth आउ किना तमे धरो OPSC पई धरो तमे प्रिपेयर करूछो so preparing for competitive examination like OPSC itself would a high pressure journey that demand long term focus time management and resilience so I have learned to stay calm under pressure break down complex goal into manageable tasks then stay motivated even when the result are delayed तो तमे कहिबो जे इटा गोटे लेंथी प्रोसेस तो लॉन्ग टर्म फोकस दरकार टाइम मैनेजमेंट दरकार पेशेंस दरकार सेति पई I am focusing more on this तो साइड बाय साइड तमे कहि परबे जे हां ता संगे रे मु मोर निजर पर्सनल फाइनेंशियल जो नीड्स को एड्रेस करिया पई हम कहबो जे आई कैन माने मु पार्ट टाइम पिला मन को पढौथली कि कोन कोथली किछि भी तमे कहि परबो इन एडमिनिस्ट्रेशन द पॉलिसी डिलेस
are inevitable due to legal logistical तमे को जे परीक्षा तो हबा को 1.5 वर्ष लागुची ना सेथिरे definitely कोन ना policy delays are inevitable due to legal and logistical and political reason. Suppose jane OFS में परीक्षा दउछ sir, after my PG I am waiting for this job, and this job already after 3 years this job came, so I am preparing for this. So many preparation phase has taught me patience, process oriented thinking, and how to stay disciplined even without immediate outcome. Okay, so I would apply the same approach, focus on timely follow-up, team coordination, stakeholder communication, while not losing the sight on the policy long-term impact. Okay, तेणु आप तमे किछ गोटे भाव जे कोन केमिति तमे गोटे कहिबो कारण जदि इयर गैप अछि तुम पचारिबे जे कोन तमे कहू तमे काहे केमिति 6-7 वर्ष ला एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड हे की बसिछ तो तापे तुमको पचारे ओके हां पायल को सर इधर हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला रीजन दे परिबा कि हमको OPSC या फिर UPSC both allow करिछि to go for multiple attempts, so सेटा गोटे वैलिड रीजन हे परिबो कि हमर ईयर गैप रोछि लास्ट टाइम एक्चुअली क्वेश्चन पचरा जाई बहुत पिलान पचरा जाई और जो माने कर ईयर गैप थिला जने एनआईटी राउरकेला रु पास आउट और सीईटी रु पास आउट तमे इंजीनियरिंग करे कि ताल तमे कुआ जेबे तमे इंजीनियरिंग काहे करूतलो तमे जदी सिविल सर्विस करिवार थिला ताले इंजीनियरिंग काहे करूतलो एंड डोंट यू थिंक दैट यू आर धर एनआईटी राउरकेला रु पास आउट कि ओटे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन रु पास आउट हे कि तमे बसिछ एंड माने अराउंड 5 इयर्स हे गलानी तुमको लागुनी जे यू आर वेस्टिंग द human resource talent of our country ki gote reputed institution pass hala par you can do something else to seita tumko mane counter pacharibe okay आ ये क्वेश्चन बहुत बिलंग पचरा भी जाय छै हम ता पे हमें गोटे पॉजिटिव वे रे केमती हमें एमिति तो कहला जे ता गोटे हमर लॉन्ग टर्म हमर निहाती दरकार फोकस ये दरकार तमे कहिबो स्टिल ओके सर तार जस्टिफिकेशन तुमको दबाक पड़ेगा ओके तो सब क्वेश्चन जे क्वेश्चन पचार तो इजी आंसर देला तो डिफिकल्ट जे पचार दे से तो खाली माने बुले बांकी पचार काई तमे बसिछ तमे पाठ पढी ताल कोन लाभ होला तमे काई के तमे गोटे गवर्नमेंट कॉलेज रे काई पैसा वेस्ट कलो तमे से सीट रे आउ के पढिथिले से कि इंजीनियरिंग चाकरी करी कि देशर माने हमें कहबा जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन करथान तमे 6-7 वर्ष ला बसी कि गवर्नमेंट जॉब पई ये करूछ कि तमे तो एते पाठ पढला एंटरप्रेन्योरशिप करी गोटे निजर किछि बिजनेस करी परथान गवर्नमेंट एते फैसिलिटीज होछि काउंटर करिया पई से माने आडू साडू गुडा क्वेश्चन सपोज हमको पछाले तो से समय रे तम पाखे से भले रिलेवेंट पॉइंट सह तुमको माने काउंटर करिया पई तम पाखे से भले पॉइंट्स रहला दरकार सर मोर गोटे क्वेश्चन रे थिला आपण जेमते कहिले जो पॉइंट ता कहिले कि ओपीएससी रो प्रोसेस भी इटसेल्फ माने 1.5 वर्ष रो हे जाउची राइट फ्रॉम द डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म सो आई मीन निज पर्सनल रीजन दबा सहित माने ओपीएससी रो ए पॉइंट ता भी कहि परिबो ये कहि परिबो कि गोटे ये रे हमें कहि परिबो जे पॉजिटिव वे रे कहबो कि सर दिस प्रोसेस इज आल्सो a lengthy process. So we have to patiently preparing for this. Suppose in one attempt we are failed to clear this exam, for another attempt we have to wait for another 2 years. तो कहि परिबो सेटा तांकर से जानि छन जे प्रोसेस ता साइकिल ता इटसेल्फ हो जे 1.5 वर्ष परे आज्ञा सर माने किंतु कहबन जे ओपीएससी करछि दिस प्रोसेस कहि कि तमे कहबो ओके तांकर किछि गुण प्रोसेस दिले हां सर माने कंस्ट्रक्टिव वे रे तांको कहयार अछि ओके ओके ठीक अछि एसडीआई पीआर सिमिलरली बाहर थिला तमरा एसडीआई पीआर सपोज 2 वर्ष तळे ओके एबे आ 2 वर्ष परे बाहर तो पिला कोन जे जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करी कि बसछन तो से तो वेट करिछन ना 2 वर्ष परे बाहर करछ पुणी माने परीक्षा हला परे पुणी 6 मास परे रिजल्ट बाहर करछ तो ये प्रोसेस इटसेल्फ तो 2.5 वर्ष नै गेला हम तो सेबेटू जेबे भी पास करी से तारी पे ही बसी प्रिपेयर करछे तमे गट ताकू किंतु गोटे पॉजिटिव वे रे को ओके ता संगे रे कहबो कि हां सर आई एम प्रिपेयरिंग कि मो फैमिली बिजनेस रे साइड रे हेल्प करूतली
बाबा करछन मु सेफ साइड पे मु किछि करनथि बाबा करथले साइड रे मु फैमिली बिजनेस रे हेल्प करछि त एमिति किछि रीजन देइ पारे तापर पछरे को बिजनेस कोन करथलो ता पई भी जहा कहूछ ता बैकअप प्लान भाबी कि कहथो नै कहला माने काउंटर इमीडिएटली हमको आसी पारे ओके ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन सो गुड नाइट टू ऑल हमें भेटबा पुणी हमें नेक्स्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमर जो हॉबीज अछि ताकु ने कि कोन कोन क्वेश्चन हे परबो एंड मेनी हमर जो प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन हम ताको डिस्कशन करबा जोडा को करंट इश्यू चली जे ताकु प्लस आ जोडा प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन में दी आडवा में प्रिपेयर हबा ओके रिजल्ट केबे आसीबो जहार बिजनेस नहीं तमे कहबो पर्सनल ट्यूशन करूतली हाँ मु अनिसा ये सब शेयर कर देबी जोड़ा आगु भी थिला जो आमे कोडे केस स्टडीज गुडा को सेडा कर दे ओके सो रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबल ओसीएस रिजल्ट हमर अगस्त मंथ रो मिड किबा थर्ड वीक रे आसीबो एंड इंटरव्यू सरी की रिजल्ट बाहला को सितंबर लास्ट किबा अक्टोबर फर्स्ट वीक आजो ओके सो से अनुसार किंतु एबेठू भल से प्रिपेयर करबा हमको निहाती दरकार हमें कहिले जे एठी गोटे गोटे मार्क रे 10 जन अछंती ओके तेनु इंटरव्यू रो मार्क जदि हमें कहबा जने 30 मार्क की 40 मार्क प्लस रे नै आसुची तम देखि ओसीएस रे पिलां को 110 भी देइछंती 170 भी देइछंती तो 60 70 मार्क रो डिफरेंस रे रैंक ही सरी जिवो सो इशू नॉट जेतबे तमे फाइनल स्टेप्स रे जाई कि पहुंचुच एंड माने तमरो गोल पाखरे पहुंचुच तो सही समय रे मैक्सिमम एफर्ट दियो एंड ट्राई करो जेमति कि यू शुड डू बेटर इन द इंटरव्यू एटलीस्ट जो गोटे रेंज अछि एवरेज टू एटलीस्ट 20% 20-25 मार्क प्लस यदि एवरेज समस्त को 31 यू शुड एम फॉर 160 प्लस तो सेटा आउ सिमिलरली एसडीआईपीआर रो जनरल मार्क हमर 30 मार्क रो 11 मार्क दोछनी मैक्सिमम लास्ट टाइम 23 मार्क देथिले तो टारगेट करो जे 20 प्लस जोटा गोटे वेरी गुड स्कोर कारण एठी भी पिला अछनी जो माने कि गोटे 2 मार्क रे कटिबे आ एते क्लोज रे आसी कि जोठी कि तमे जदी इंटरव्यू को जाउछ तमरो सक्सेस हबार माने पॉसिबिलिटी होची 50%. So how to convert that 50% to 100% सेटा otherwise पुणी हमको सेही साइकिल रो पुणी 1.5 वर्ष वेट करिया पड़ियो पुणी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बहुत हेक्टिक प्रोसेस जदी तमे इंटरव्यू को जाउछ सो एबे मु सेत पे कहूची जे योर अप्रोच शुड बी बोथ प्रिलिम आउ जो माने ओसीएस को कथा कहूची प्रिलिम आउ इंटरव्यू रहबा कथा जदी बैकअप रे जदी फाइनल को जाई कि जदी काहर भी अनफॉर्चूनेटली few marks रे कटुची सो यू शुड हैव ए बैकअप प्लान कि नेक्स्ट जेमति कि 10 दिन भीतर जदी प्रिलिम होची आई शुड बी रेडी टू क्लियर द प्रिलिम से स्ट्रेटजी नै कि चलो एबे पूरा प्लान करे कि पढो ए जो मासडा हमर रहिला 1 मंथ भीतर बाहरुची त बोथ मु कहूची जे मॉक टेस्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा करो सो दैट कांसेप्ट गुडा तमे पढी छ ऑलरेडी सेते रिवाइज हे जिवो ओके एंड मॉक टेस्ट जदी करूछ तमे ओटे कंपटीशन भीतर कोठी स्टैंड आउट करूछ तमे निजे जानि परिबो ओके एंड ता संगे हमर करंट रो जो जो गुडा को माने हॉट इश्यू चली छि ता ऊपर आइडिया रखो जे मते जदी पचरा जिवो जे तमे जानि छ तुमको तमरो प्रोफाइल कोन तमे रखिबो आ ता रिलेटेड कोन क्वेश्चन पचरा जाई पारे यू जस्ट गेस इट जे या मते पचरा जाई पारे तो एटा पचरे मु कोन कहिबी सो सेटा को सबले तमे ट्राई कर एनालिसिस करिया ओके सो ठीक अछि थैंक यू गाइस गुड नाइट टू ऑल